It's going to take at least a year to rebuild Himachal, is what Chief Minister Sukhwinder Sukhu has told NDTV as the state nears the brunt of a record 50-year rainfall and massive landslides in different parts of the state. Chief Minister has said damages are worth over 10,000 crores. The death toll is likely to continue to rise. All schools and colleges across the state will remain closed till August 19th in view of the extreme weather. Himachal Pradesh University too has suspended teaching activities till then. 2 teams of National Disaster Response Force have been deployed in the state, one each in Shimla and Kangra. Besides the Air Force, Army, the Indo-Tibetan border, police are also helping in rescue operations in Shimla. Officials have said that at least 800 roads are blocked in the state due to landslides, and the state has suffered losses worth thousands of crores this monsoon season. These roads were blocked, according to the information that we had, at least till last evening. Now, the death and devastation that is being seen around is so tragic, even as bodies are being pulled out from landslide sites. My colleague Parimal sends us this report that shows us the extent of destruction. 7 people of the same family died as 3 houses collapsed suddenly. बादल गरजने की आवाज़ आई तो फिर जैसे ही एकदम से उठा मैं तो पापा की आवाज़ सुनाई दी कि मेरे को बचाओ। तो मैं जैसे ही उठा मैंने दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, अंदर गया तो देखा इनको ऊपर मलबा था आया हुआ जी। तो मैंने थोड़ा सा इनको उठाया ऊपर, तब इनको बोला, मैं कहा आप ठीक है? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद मैं पहले सिस्टर के रूम को गया, उनका पूरा कमरा मलबे के साथ फुल था। उसके बाद मैंने सिस्टर को आवाज़ लगाई, तब उनकी आवाज़ भी आई कि कहते मैं ठीक हूँ। मैं कहा बच्चे वगैरह ठीक है? कहते हाँ ठीक है। तो उनको निकालना मुश्किल था क्योंकि 2-3 टिप्पर मलबे के ऊपर थे, तो उनको निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मैं ऊपर गया, दूसरे मकान को ऊपर, जो ब्रदर का मकान था वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। रात का टाइम था, टॉर्च के साथ देखा, लेकिन मेरे को कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया। वहाँ पे बिल्कुल सब मकान वगैरह। आपको कब पता चला कि परिवार में इतने सारे लोगों को आपने खो दिया है? रात को सर, जब मैं उठा, जब आवाज़ वगैरह हुई, उसके बाद इधर उधर मैंने आवाज़ें लगाई, फिर उसके बाद लगा मेरे को पता कि हाँ सारे एक साथ हो गए, सारे मतलब दफन हो गए मिट्टी के बीच, इनको निकालना है। कोई सरकार प्रशासन की तरफ से आप लोगों से कोई बातचीत हुई? सर अभी तो ऐसे कोई बात नहीं हुई है हमारे साथ। बाकी आए थे, काफ़ी आए हुए थे ऐसे तो लोग, बाहर से बहुत लोग आए हुए थे। थोड़ी बहुत ही हेल्प भी कर गए वो, जितनी हो सकी उनसे। आप अपना नाम बता दीजिए। राम भजन जी, जो बाकी लोग तमाम लोग आए आप लोगों के पास, आप लोग क्या चाहते हैं और वो क्या कह कर गए आप? सर वो आश्वासन दे के गए हैं कि इनको घर भी बना के देंगे और इनकी आर्थिक सहायता भी करेंगे, और कुछ की भी है उन लोगों ने। शासन भी आया है और प्रशासन भी आया, प्रशासन भी कर रहा है हमारी सहायता। जो कल भी आए थे नायब साहब, तो कल भी वो राशन दे के गए हैं, कंबल दे के गए हैं, सहायता तो कर रहे हैं। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है, इनको मकान बनाने के लिए आ सकती है, तो उस टाइम भी अगर वो सहायता करेंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। And one family in Shimla has had an irreparable loss. The family has lost 3 generations in a landslide in Shimla's Summer Hill that led to the collapse of a Shiv temple. 7 members of the family, including 3 children, were inside the temple when it collapsed. The family is now inconsolable, demanding answers. The biggest blow to a single family. 3 generations wiped out in a matter of seconds in the Summer Hill area of Shimla in Himachal Pradesh. Teams of Himachal Police, NDRF, SDRF and the Indian Army are clearing debris, searching for survivors and dead bodies. जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं।
हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है। सर्च कंप्लीट होने का पूरी तरह से पुख्ता जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नीचे डेड बॉडीज जहां तक गई हैं उसका फैलाव लगभग 2 किलोमीटर तक का है, क्योंकि नीचे वाले इलाके में मशीनरी यूज नहीं हो सकती, मैनुअल ही काम करना पड़ेगा। The remaining family and neighbors are unable to come to terms with their grief, still hoping against hope. मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जितनी जल्दी से हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। मेरे को ला रही थी वो साथ, तो जाके जी मेरे को बुखार हो गया, मैं नहीं आया। आज मेरी भाभी 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर। इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई जी। There are many such families across Himachal Pradesh today. They have lost children, parents, siblings. More have lost livelihoods, homes and farms. As the government struggles to reach rescue and relief to everyone, Himachal is a state in mourning, covered in gloom. NDTV Bureau Report. Yes, Himachal has witnessed record rainfall, highest in 50 years. But what about the construction? What about drainage? What about the different construction and urban activities that have been happening in different parts of Himachal? Chief Minister Sukhwinder Sukhu spoke exclusively to NDTV. Let's listen in. मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या जी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो, खासतौर से शिमला में बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए, कहां पे बनाए जाए, इसको लेकर कुछ नए कायदे कानून, कुछ नए नॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है? नहीं, हमने कल कह दिया नए नियम तो बनाने हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है कि क्या हमें अगर हमने 8 स्टोरी बिल्डिंग बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, 2 स्टोरी बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और ड्रेनेज पर ध्यान रहेगा कि मेरे घर का पानी दूसरे के घर के पानी में ना जाए, दूसरे के घर का पानी तीसरे के घर, क्योंकि आप पहाड़ में पानी फेंक रहे हो, यानी कि अपनी बिल्डिंग के नीचे पानी फेंक रहे हो, उन जो पिलर है उनको खोखला कर रहे हो, ये कारण भी रहा है। पर सुक्खू साहब, जो बार बार ये बात होती है खासतौर से पहाड़ी राज्यों के लिए कि जिस तरीके से अब पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे कई सारी परियोजनाएं हो, रोड्स का भी क्या एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी सड़कें अभी बनी हैं, उसके कारण क्या पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है? मैं कई बार पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें बनने से ऐसा, हमारे यहाँ तो 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है, पंचायतों में सड़क बनी है। पंचायतों में अगर 10 किलोमीटर सड़क बनी है तो जो लैंडस्लाइड है वो कई जगह 25 मीटर में, कई जगह 100 मीटर में, कई जगह 30 मीटर में, पूरी नहीं है। जो 4 लेन बन रहे हैं वो सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। एक बन रहा है कीरतपुर मनाली जो बनकर तैयार हुआ, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, उसमें लैंडस्लाइड हुए कुछ जगह पर, वो खुला है हमारा। एक हमारी सोलन से जो परमाणु वाला है, उसकी जो जिसने भी बनाया उसकी इंजीनियरिंग वर्क मेरे को समझ नहीं आया कि पुराने रोड को ही चौड़ा करके 4 लेन बना दी। हमें टर्निंग पर जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने जब वो समर कैपिटल शिमला थी तो कालका से शिमला की रेलवे लाइन में 103 टनल बनाई थी। क्यों बनाई थी उन्होंने? इसलिए बनाई थी कहाँ की पहाड़ बचे रहे, और जब पहाड़ जब कटता है तो वो 4 से 6 साल सेटल होने में लगता है। लैंडस्लाइड पहले भी होते आए, हम तो जीवन से शिमला में ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहले, पर इस बार लैंडस्लाइड ज्यादा इसलिए हुए कि तेज बारिश रही। क्लाइमेट चेंज का भी असर है। स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां बारिश होगी। अगर स्पीति में 1 दिन और 2 दिन बारिश हो तो पूरा स्पीति तो रेत का टीला है, चाइना बॉर्डर के रेत का टीला है वो। लाहौल स्पीति सब चाइना बॉर्डर के साथ लगते हैं। इसमें अगर 2 दिन ज्यादा बारिश होगी तो पूरा वो चीज बह जाएगी। तो इस चीजों को साइंटिफिक तरीके से भी सोचने की जरूरत है, और जो प्रैक्टिकल अनुभव है उससे भी सीखने की जरूरत है कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर है और हमारे जो स्टेटा के हिसाब से डिजाइनिंग नहीं कर देते, उस ढंग से हमें आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। And from Himachal to Uttarakhand, which is also facing extensive damage
caused due to heavy rainfall over the past few days. More than 250 roads have been damaged and are shut due to landslides, including patches of the national highway. Hundreds of villages have been cut off from district headquarters. Search and rescue operations are underway in these places as well. It's time for a short break. On the other side, we'll bring you all the latest that happened in the late night meeting of BJP on the elections that lie ahead. Welcome back. And it's of course not a run up only to the 2024 elections. Several states are also going to go for the state elections right before that later this year. Now, BJP on Wednesday held some very key meetings which were reviewed by the party top leaders, including Prime Minister, who chaired this meeting. Now, what happened in that meeting? They looked at their strategies for states like Chhattisgarh and Madhya Pradesh, something that the party has been doing. They categorized the different seats within these states based on the winnability proportion and then went on to decide on how to really go ahead with it. My colleague Megha Prasad joins us right now. Megha, an important aspect of this perhaps being that how the party has gone ahead for this very critical meeting within the party with all the high level leaders, including Prime Minister himself, before the polls. Well, Sneha, what sets the meeting apart yesterday of the Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party is, that this perhaps has happened for the first time in the history of BJP. We've never seen this before, and I don't think any other party has done anything similar. And why am I saying that? It's because you had the Bharatiya Janata Party Central Election Committee sit down to decide on, look at the candidates for different constituencies much well before the dates of the election have been announced. So they were looking at two poll-bound states, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Remember, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are going to go to polls by the end of this year. So you can imagine the advanced planning that is happening. Even if parties were to, or even for that matter, BJP, have indulged in a similar exercise beforehand also to basically look at constituencies where they haven't done well. This time they formally had the Central Election Committee sit almost, I would say, 4 months in advance. So this sort of an exercise we've never seen before. Yesterday, the Prime Minister was there. It was the meeting, of course, was chaired by Mr. Nanda, but under the leadership of the Prime Minister. The entire Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party, people like Shivraj Singh Chauhan, Mr. Devendra Fadnavis, all of them had flown in from their own states, and they were part of the meeting yesterday. What happened in the meeting? Very interesting. Chhattisgarh was looked in great detail, so was Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, the discussion has not been concluded as yet on Madhya Pradesh, so there would be another round of meeting for that. As far as Chhattisgarh is concerned, the party sat down and looked at 27 constituencies in Chhattisgarh really closely. Categorized those constituencies in 4 different parts, A, B, C, and D. And each one of them meant, had a different parameter. For example, category A seats are the seats where BJP kind of does well. Category B seats are those seats where BJP has lost and won in the past. Category C seats are where BJP has lost twice in the past. And category D seats are those constituencies where BJP has never won. So what they have done is they've looked at the caste combinations, they have looked at other local factors, and then they have looked at the panel of candidates, the panel of possible, probable candidates in all of these places. So you should assume that, they have now a fair idea of who they want to, get the ticket from the side of the party in Chhattisgarh for all of these seats. But has that entire thing been finalized, or will there be another round of meeting for Chhattisgarh before an announcement is done? Whether an announcement is to be done, actually a formal announcement for these for the candidates for these seats in Chhattisgarh, that we are unclear at this moment. But suffice to say,
Sneha, that the party will have identified people in all of these seats soon enough, and those will be communicated duly about them being the people who the party will eventually be giving the ticket for the upcoming state elections. Right. Thank you very much, Megha, for all of those details. And more differences seem to be emerging between the India alliance partners. Now, the Aam Aadmi Party has said the people in Congress-ruled Chhattisgarh need change, despite the two parties being together in the India alliance for the 2024 Lok Sabha elections. Aam Aadmi Party announced that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann will be campaigning in Chhattisgarh. While in Delhi, the Aam Aadmi Party hit back after a Congress leader announced that they would contest all 7 seats, saying that there's no point of attending the next India Alliance meeting in Mumbai. And NCP President Sharad Pawar is set to hold a big rally at Beed in Maharashtra's Marathwada region today, which will mark the resumption of his statewide tour. This comes a day after Sharad Pawar and his daughter Supriya Sule have rubbished claims from the Congress, saying that Sharad Pawar and Supriya Sule have been offered union minister post in exchange of deserting the India bloc, that's the alliance of the opposition, and tying up with the BJP. The rumours began after Sharad Pawar's secret meeting with his nephew in Pune. In fact, Sharad Pawar himself has said the meeting did happen and that's no secret, but there was no discussion on politics. It's time for a short break, but on the other side, a very shameful incident that seemed to have happened in Mumbai. Welcome back. Due to an acute shortage of organ donors, the number of patients on the waiting list for organ transplantation is running into thousands. In Maharashtra, 5,832 patients are waiting for kidneys. Over 4,000 patients are waiting for an organ donation in Mumbai alone. It's no different in most parts of India, but here's a story out of Maharashtra. 50-year-old Bharti Jain has been waiting for a kidney for the past 6 years. A long illness had affected her kidneys. मुझे 20 इयर्स पहले लूपस डिटेक्ट हुआ था, तो लूपस में सब स्टेरॉइड्स है, हैवी मेडिसिन्स है, उसकी वजह से किडनी पे इशू हुआ. फिर धीरे धीरे किडनी डैमेज हो गई, तो अभी लास्ट 6 साल से हूँ डायलिसिस में. वेट कर रहे लेकिन अभी तक चांस नहीं हुआ है और पेशेंट भी बहुत है. 53-year-old Mamta Pallav works in a bank. Last year she discovered that her kidney was damaged. Her family members are unable to help as they suffer from medical issues such as high blood pressure and diabetes. She makes frequent visits to the hospital for a donor. मुझे भी इतना मालूम नहीं था. जब ये मेरा हो गया प्रॉब्लम, तभी मुझे ऐसा महसूस हो गया कि लोगों ने करना चाहिए donation. 5,832 people are waiting for kidneys, 1,284 for livers, 108 people are waiting for a heart transplant, 48 people are looking for a lung transplant, and 35 people are waiting for pancreas transplant. Mumbai has seen a decline of about 42% in kidney donations in the last 3 years. If you look at the number of kidney donations in Mumbai in the last few years, then it's clear that from the 73 people that donated kidneys in 2018, that number reached 121 in 2019. However, in 2020, only 45 people came forward to donate kidneys. In 2021, 50 donated. By 2022, the number reaches 70. And again, by August 2023, only 48 donors donated kidneys. Awareness about organ donation is increasing in Mumbai, but the number of organ donors is still below what is needed. Dr. Bharat Shah, Secretary of the Zonal Transplant Coordination Committee or ZTCC, says that the actual number is much higher than the waiting list. Number of patients जो wait कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को organ की ज़रूरत है. ये भी awareness लोगों को नहीं है कि अगर उनका organ fail हुआ तो वो रजिस्टर करके वेटिंग लिस्ट पे उनका नाम लगा सकते हैं. तो आपने जो 4,000 का नंबर बताया वो खाली किडनी के पेशेंट्स है. बहुत सारे पेशेंट्स लीवर, हार्ट, लंग के लिए भी वेट करते हैं.
अब जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो डायलिसिस पे चालू रह सकते हैं तो उनका नंबर्स बढ़ते जाएगा, लेकिन किडनी, हार्ट, लीवर, लंग है वो पेशेंट जिंदा नहीं रह सकते। अगर उनको जल्दी ऑर्गन नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन रेट बढ़े। Experts say that 5 lakh people die every year in India due to lack of timely organ availability. Due to a lack of awareness, people don't come forward to donate. According to the National Health Portal, there are only 0.65 organ donations per million population in the country, compared to 35 in Spain and 26 in the US. It said that a brain-dead person can give a new lease of life to 8 people. With Pooja Bhardwaj in Mumbai, Bureau Report, NDTV. Now, an extremely sad, shameful story from Maharashtra. A Muslim teenager was thrashed by a group of men at Mumbai's Bandra railway station after he was seen with a girl from another religion who's supposed to be a Hindu girl, whose parents had filed a police case of kidnapping. The incident reportedly happened on July 21st, though the video went viral on social media on Tuesday. A video of the incident shows the teen being kicked, punched and dragged by a mob. They took him outside the railway station and thrashed him there too. The men then handed over the girl to the police. An FIR has been filed in the case and the investigation is underway. हमारा मकसद एक ही है, अगर किसी ने कोई गलती किया है, गुनाह किया है, जुर्म किया है, आप उसको पकड़िए, उसको पुलिस के हवाले करिए, सख्त से सख्त सजा दिलाइए कानूनी। आपको किसने अधिकार दिया है कानून कायदा अपने हाथ में लेने का? किसी का नहीं, वरना कोर्ट कचहरी सब बंद कर देनी पड़ेगी ना। आप मारते जा रहे हो जेएसआर के नारे लगाते हुए उसको, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर का, हमारे राज्य का, देश का माहौल खराब हो। हम चाहते सब मोहब्बत से रहे, नफरत के बाजार को बंद करिए। तो हमारा यही है और हमने रिक्वेस्ट वापस किया है पुलिस से कि किसी भी तरह से जो लड़के उनको अरेस्ट किया जाए, सख्त कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह की घटना ना हो। Right, and I'm being joined by my colleague Sunil Singh right now from Mumbai. Sunil, can you give us the details of what is really happening in this case currently as we speak? देखिए, इसमें जो पीड़ित है यानी लड़की और जो आरोपी है, माफ कीजिए, जो पीड़ित है लड़का और जो लड़की जिसके साथ वो जा रहा था, दोनों ही नाबालिग हैं। और पता ये चला है कि अंबरनाथ में रहने वाली लड़की अपने दोस्त के साथ, जो कि मुस्लिम युवक है, उसके साथ वो बाहर चली गई, घर से बाहर भाग गई थी। पुलिस वाले ने उस दिन अंबरनाथ में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद लड़के उससे ढूंढते हुए निकले थे, तो उन्हें पता चला था बांद्रा टर्मिनस पर दोनों मौजूद हैं। तो जो ग्रुप है वहाँ पर आने के बाद उन्होंने उसको पकड़ा, उसके साथ उसकी पिटाई भी की और फिर उसे लेकर गए। निर्मल नगर पुलिस में मामला गया, तो निर्मल नगर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि किडनैपिंग का मामला दर्ज है उस लड़के के खिलाफ अंबरनाथ में, तो उन्होंने वहाँ अंबरनाथ पुलिस को हवाले कर दिया। जहाँ के बाद चूंकि दोनों माइनर थे तो पुलिस ने दोनों को अपने अपने परिवारों के पास भेज दिया। लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है और इसमें दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने उसकी पिटाई की है और किस तरह से नारे लगा रहे हैं, तो उसके आधार पर अब जो है कि निर्मल नगर पुलिस से जानकारी लेने के बाद बांद्रा जीआरपी ने इस मामले में FIR दर्ज किया है और जो भी इसमें वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश फिलहाल की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। Right. Thank you very much, Sunil Singh, for this update. It's time for a short break. Welcome back. Vindhyagiri, a Project 17A frigate, will be launched by the President of India, Draupadi Murmu, at Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, on the 17th of August. Vindhyagiri, named after the mountain range in Karnataka, is the 6th ship of the Project 17A frigate and the last one to be built at the Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata. In fact, Vindhyagiri's a technologically advanced frigate pays a befitting tribute to the distinguished services of its predecessor, the erstwhile INS Vindhyagiri, the Leander class ASW frigate. The old Vindhyagiri, in its nearly 31 years of service from 8th July
to July 81 to June 12 had witnessed various challenging operations and multinational activities. The newly christened Vindhyagiri stands as a symbol of India's determination to embrace its rich naval heritage while propelling itself towards a future of indigenous defense capabilities. The sixth and final ship of Project 17A series, which are stealth guided missile frigates that are being built for the Indian Navy. They are being built at two places, one of them being the Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata, and this is the final ship being built at GRSE. These ships, when delivered to the Indian Navy and commissioned, will be an important step towards the goal of the Indian Navy becoming self-reliant or Atmanirbhar. These warships are follow-ons of the Project 17 class frigates or the Shivalik class, with improved stealth features, advanced weapons and sensors, and platform management systems. Project 17A ships have been designed in-house by the Indian Navy's Warship Design Bureau, the pioneer organization for all warship design activities. Once commissioned into the Indian Navy, she will be known as INS Vindhyagiri. But today is an equally important day in her life, being launched into water for the first time by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. And when she is completed and fitted with the modern weaponry and technology that will be part of her arsenal, she will be an important step towards the goal of self-reliance or Atmanirbharta of the Indian Navy. Under the Project 17A program, a total of 4 ships by Mazgaon Docks Limited and 3 ships by Garden Reach Shipbuilders and Engineers are under construction. The project's first 5 ships have been launched by MDL and GRSE between 2019 and 2022. A substantial 75% of the orders for equipment and systems of Project 17A ships are from indigenous firms, including micro, small and medium enterprises or MSMEs. The launch of Vindhyagiri is a testament to the incredible progress our nation has made in building a self-reliant naval force. Project 17A is of extreme importance to the Indian Navy as it is the latest series of ships to join the Indian Navy's fleet. While Vindhyagiri is being launched by the President of India, 2 other ships that are also being built under the project at the Garden Reach Shipbuilders and Engineers have already been launched and are in different stages of construction. When delivered to the Indian Navy, these ships will significantly boost its capabilities and enhance India's marine defense system. With camera person GD Shankar at GRSE in Kolkata, Saurabh Gupta, NDTV. And now to a unique initiative at Chennai fuel station. A one-of-a-kind fuel station in the Tamil Nadu city is run by women convicts. 26 convicts have been employed on the basis of good behavior and they make up to 6,000 rupees a month. As a part of the station's Freedom Initiative, it aims to give women convicts a second chance. A fuel filling station just outside Chennai's Pural prison. It's the first of its kind being run by women convicts for who the jail is still home. 26 of them were handpicked on the basis of their good conduct. The attempt is to boost their confidence and get rid of the stigma so they can eventually reintegrate themselves into society. They can have confidence, self-confidence, they can earn much and spend to their family and for themselves. And the main thing is they can reintegrate with the mainstream of society. The job fetches the women up to 6,000 rupees a month. That's to be revised to 10,000 rupees soon.
The initiative has not been met with any hostility from the local community. ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்காண்டி அவங்கள போட்டு இது வெளியில் கொஞ்சம் இவங்களுக்கு ஃப்ரீடமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அடுத்த லெவலுக்கு இவங்களை கொண்டு போகிற ஒரே இடத்துல வச்சு அவங்கள வந்து சிறை கைதியாகவே பார்க்காம கொண்டு வந்து வெளியில் கொண்டு வந்து இவங்களை வந்து இது மாதிரி செய்ய வைக்கிறது பெஸ்ட். மக்களோட மக்கள் இருக்கிறதுனால அந்த சிறை தண்டனை கைதிங்கிற மனப்பக்குவம் போய் நம்மளும் ஒரு ஒர்க்கரு ஒரு நல்ல சராசரி மனுஷங்கிற நினைப்பு கட்டாயம் வரும் அவங்களுக்கு. The Tamil Nadu Prisons Department has encouraged reforms to inculcate reading and education among inmates, counseling to see that first-time remand prisoners don't turn into habitual offenders. It's indeed a freedom initiative that could help convicts reintegrate with the community without any stigma and also develops a spirit of acceptance among the public. Certainly a model worth replicating. At the Freedom Filling Station outside the Pural prison, with Suresh, Sam Daniel, for NDTV.